Hello everyone. In this video, we will be solving previous year UGC NET Computer Science question paper. This is a good news for everyone that we have started online live classes for UGC NET exam preparation. So these will be live video classes and the courses consist of live sessions distributed over the course period. And sessions will also be in recorded format. So whatever classes we have done, you can watch those classes live and even after the session. So it will be providing a personalized learning. We will be having a private discussion forum and the classroom environment. So if you want to enroll for this live UGC NET Plus course, then you can visit our website or call on the numbers provided in this video. And if you want to download the presentation PPT that is used in this video, please visit our website www.digimentor.com. From there, in the download section, you can get the free study material, or you can also check out our courses and the live classes information. Let us start with the following video. Now let's talk about question number 14. Consider a triangle. This is a triangle. The points are A, B and C. The triangle has to be rotated by an angle of 45 degrees about the point P. This is a point. What shall be the coordinates of a new triangle? Basically, this question comes from computer graphics, and this the topic is composite transformations. So we have studied so many transformations like translation, transformations, right? So we have different types of transformations in the computer graphics. The first one is translation. I'm talking about three main transformations, and the second one is rotation, and the third one is scaling, right? So in the translation transformation, we are changing the position of the object, right? If one object is present here, then I want to change the position of this object and I want to place it here, right? So this is a translation. In the rotation, if any object is present here, I want to rotate this particular object into some particular angle. Let's suppose I want to rotate this particular object into 45 degree. तो मैं अगर मैं से 45 degree में अगर मैं इसे rotate करती हूँ तो how it looks like, right? And scaling के अंदर क्या है कि scaling के अंदर we are resize the object, कि हमें reduce करना है उसका size या फिर increase करना है size. So these kinds of modification or transformation we are doing in the scaling, right? So अगर मैं इनमें से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन को या सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को अगर एक क्वेश्चन के अंदर कंबाइन कर देती हूँ, राइट? अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे ट्रांसलेशन भी लगाना है कि मुझे उसकी पोजीशन को भी चेंज करना है, मुझे उसको रोटेट भी करना है और मुझे उसके साइज को भी रिड्यूस करना है. अगर मैं तीनों की तीनों ट्रांसफॉर्मेशन लगा रही हूँ तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन. Got it, right? So this question is basically is a question from composite transformation topic. So they are saying that there is a one triangle. So let's draw the triangle with the help of these given points A, B and C, right? So let's draw it first. So first point is 0, 0. This is a A point, right? And the point name is A. Now the next point is B1, 1, right? Let's suppose this 0 and this is 1 and this is also 1. So this is a point, B point, and this is 1, 1. X is B1 and Y axis is also 1. And the next point is C, is where X is 5 and this one is 2, right? Like this. So this will become 2, 3, 4 and 5. So it goes like here. So this is a point where X is 5 and Y is equal to 2. Now join all these like this. 1 second, I'm drawing it again. So if something looks like this, right? So this is a B point, and let's suppose this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5.
Okay, so this is a rough diagram. So this is a triangle A, B and C, right? Now we draw the triangle first. Now the next step is the triangle has to be rotated by an angle 45 degree about the point E11, right? So there is a point which is available is point -1, like there is a point here, -1 and -1, right? Some point is present here and I want to rotate this particular triangle at this point at the degree of 45 degree, right? But in the transformation topic, when we studied translation, rotation and scaling, we studied that जब भी हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, वी आर डूइंग द ट्रांसफॉर्मेशंस एट द ओरिजिन के ऊपर आकर ही हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करें कि रोटेट कर रहे हैं या फिर रीसाइज कर रहे हैं या फिर उसे ट्रांसलेट करें, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर रहे हैं, राइट? तो हमें ओरिजिन के रिस्पेक्टिव में ट्रांसफॉर्मेशंस लगाना आता है, बट एट सम पर्टिकुलर पॉइंट वी आर डोंट नो. सो हम क्या करते हैं कि पहले इस पॉइंट को, फर्स्ट स्टेप इज टू मूव दिस पाइवट पॉइंट टू दैट ओरिजिन, ठीक है? पहले हम इसे ओरिजिन के ऊपर लेके आएंगे, फिर हम रोटेशन करेंगे, ठीक है? तो किसी भी पॉइंट को, किसी भी लाइन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब भी हमें मूव करवाना है कहाँ से? इस पॉइंट से इस ओरिजिन के ऊपर मूव करवाना है, तो हम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं? ट्रांसलेशन. बिकॉज ट्रांसलेशन की प्रॉपर्टी क्या है? ट्रांसलेशन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चाहे वो पॉइंट हो, पॉइंट की भी हम पोजीशन चेंज करेंगे तो हम कौन सा ऑपरेशन प्रोवाइड करेंगे? ट्रांसलेशन, ठीक है? सो आई एम राइटिंग द स्टेप. द फर्स्ट स्टेप इज to shift this pivot point जिसके रिस्पेक्टिव में मुझे इस ट्रायंगल को रोटेट करना है. To shift this pivot point and the point name is P -1, right? मैं क्यों इसको शिफ्ट कर रही हूँ? क्योंकि मुझे रोटेशन जो आती है किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की, वो ओरिजिन के रिस्पेक्टिव में आती है. तो पहले मैं क्या करूंगी? इस ऑब्जेक्ट को ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट रख के इसे रोटेट करूंगी 45 डिग्री, और फिर मैं क्या करूंगी? उसे रोटेट करने के बाद फिर मैं उस ट्राइंगल को ट्रांसलेट कर दूंगी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है? तो इसमें मुझे कौन से ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी? एक तो ट्रांसलेशन की जरूरत मुझे 2 टाइम पड़ेगी. बिकॉज एक फर्स्ट टाइम जब मैं इस पॉइंट को, इस पाइवट पॉइंट को इस ओरिजिन के ऊपर लेके जाऊंगी, राइट? फर्स्ट टाइम. एंड द सेकेंड टाइम इज व्हेन जब ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट को दोबारा से मुझे इस पाइवट पॉइंट के ऊपर रखना होगा, तब मुझे ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी. एंड रोटेशन मुझे 45 डिग्री को इसको करना पड़ेगा, राइट? So these two transformations technique I required in this question. So the first step is to shift this pivot point to origin. अब origin पे करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि this is a -1, तो अगर मैं -1 के अंदर +1 ऐड कर दूं तो we got 0, and same in this case, so 0 0. This is going to be 0 0. ये पॉइंट हमारा आ गया origin के ऊपर, ठीक है? Now the translation matrix for this is, because हमने इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो you know that translation matrix क्या होती है? 1 0 0 1 0 0 1 1 1. This is a translation matrix. I have already discussed this about translation matrix in the computer graphics, right? So this is a translation matrix. फर्स्ट टाइम मैंने इसे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स यूज किया बिकॉज मैंने एक पॉइंट को किस पर्टिकुलर पोजीशन से मैंने इसे ओरिजिन के ऊपर शिफ्ट कर दिया, राइट? अब सेकंड टास्क इज टू रोटेट दिस ट्रायंगल टू 45 डिग्री, ठीक है? तो मुझे अभी ये रोटेट करना है इसे 45 डिग्री पर. तो उसका जो रोटेशन का मैट्रिक्स होता है, रोटेशन transformation matrix is cos theta sin theta minus sin theta, and this is a sin theta and this is a cos theta, and this is 0 0 0 0 1,
ठीक है, इसे होमोजेनियस मैट्रिक्स बनाने के लिए आई एम यूजिंग दिस बिकॉज 3 पॉइंट्स है एंड तो मुझे इसे होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने के लिए दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस 0 0 1 and this is 0 0 1, right? So now this is step number 1, this is a step number 2 and step number 3 क्या होगा? Step number 3 is I want to place this particular point at that original position. So उसके लिए भी I need translation matrix. Now in this time translation matrix is what? This is 0 and 1. This is a translation matrix and in this case this is tx, this is a ty. Okay, ये तो मैंने 0 0 1 is used for homogeneous coordinates because 3 coordinates हैं, so that's why I make it into 3 into 3 matrix. Now this is tx and this is a ty because मैंने इसमें +1 ऐड किया था and +1 ऐड किया था because ये origin के अंदर कन्वर्ट हो सके. बट इन दिस केस नाउ आई वांट दिस पॉइंट टू बैक टू दिस पोजीशन. अब मुझे क्या करना पड़ेगा? -1 एंड -1 ऐड करना पड़ेगा इस ओरिजिन के अंदर. तो अब हमारा tx कितना होगा? ट्रांसलेशन पॉइंट क्या होगा? -1 एंड -1 एंड ये 3 into 3 का मुझे मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा. दैट्स व्हाई आई एम एडिंग दिस रो. ठीक है, सो दीज 3 स्टेप्स आर देयर. इस पे मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगानी पड़ेगी एंड देन आई फाउंड सम न्यू पॉइंट्स फॉर a dash, b dash and c dash after rotation. So let's solve these two. So सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के ऊपर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगानी पड़ेगी एंड उसके बाद जो आंसर आएगा उससे इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी. ठीक है, so I'm writing here. First one is 1 0 1 0 1 1 0 0 1. This is a translation matrix. This is a translation matrix for shift pivot point -minus to origin. Okay, so for that I need tx is equal to 1 and this ty is equal to 1, right? And the next matrix is for the rotation matrix. Now that you know that this is a cos theta excuse me. So cos theta is in our case cos theta is 45 degree, cos 45 degree, sin 45 degree, cos 45 degree and sin 45 degree. Now you know that cos 45 degree is equal to 1 by √2 and sin 45 degree is also 1 by √2. Right, now I'm just applying the value directly. So my matrix is now 1 by √2 minus 1 by √2 minus 1, sorry this is 0 and this is 1 by √2 1 by √2 and this is going to be 0. Okay, and this is 0 0 1 and the next and the last translation is when I want to place that particular origin to that particular point. For that I need translation matrix. The translation matrix is going to be like this and now in this case tx is equal to, अब मुझे क्या करना है? This is a translation matrix. Now I want to shift the point is 0 0. अब इस 0 0 जो ओरिजिन है उससे मुझे क्या करना है? पाइवोट पॉइंट के ऊपर शिफ्ट करना है एंड द पाइवोट पॉइंट इज -1 नाउ 0 के अंदर मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा ताकि मैं -1 आ जाए? -1 ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी -1 ऐड करना पड़ेगा एंड दिस इज फॉर द होमोजेनियस टू कन्वर्ट into a 3 into 3 matrix. I add this row. Now apply the matrix multiplication in this case. So matrix multiplication and the answer we got is this row multiply with this row, then this row, then this row, then this row, then this row. Okay, you know that how to multiply two matrices. Then after multiplication the result is going to be 1 by √2 because 1 by √2 multiply with 1 is 1 by √2, then -1 by √2 multiply with 0 0 0 multiply with 0 is 0 only.
Then again 1 by root 2 multiplied with 0 is 0, minus 1 by root 2 multiplied with 1 is minus 1 by root 2, and 0 multiplied with 0 is 0 only. Then this row and third column, so 1 by root 2, and this is going to be minus 1 by root 2, and this is going to be 0. 1 by root 2, and this is minus 1 by root 2, so this is going to be cancelled, right? Now answer will become 0. So 1 second, I'm writing here. That's why the result is 0, because minus 1 by root 2 and minus 1 by root 2 cancel it out. Now the next second row, first column, so answer is 1 by root 2. This is going to be 1 by root 2, and this is going to be 2 by root 2 by 2. Okay, now the next is this row and this column. This is going to be 0, this 0 and 1. Okay, so this is the matrix multiplication of these two matrices, and the left out matrix is this: 1 0 minus 1 0 1 minus 1, and this is going to be 0 0 1. Now apply the matrix multiplication on this on these two matrix, and the result is 1 by root 2. This is going to be minus 1 by root 2, and this is minus 1. 1 by root 2, 1 by root 2, and this is going to be 2 by root 2 by 2, and this is 0 0 1. So this is the matrix multiplication of these two matrices. So basically this is a resultant matrix जिसे हमने रोटेट किया है 45 डिग्री पर about the point -1 -1. Now this is the matrix, so I'm writing it again: 1 by root 2, 1 by root 2, 0, minus 1 by root 2, 1 by root 2, 0, and this is minus 1, 2 under root 2 by 2, and this is going to be 1. And next matrix is the points of these A, B and C. So the first row contains 0, 1, 5. Next one contains 0, 1 and 2. So I want to calculate the new point slide. So for that I need multiplication of these two. So this is going to be 0, 1, 2, and this is, I'm adding 1, 1, 1 because I want to convert it into a homogeneous coordinates, because this is 3 into 3 and this is become 2 into 3, so I'm adding 1, 1, 1 here. Now apply the matrix multiplication here, and the resultant matrix is going to be -1. This is going to be minus 1 by root 2, minus 1 by root 2, and this is -1, and then it is going to be 5 divided by under root 2, 2 by under root 2 minus 1, and this is going to be next row 2 by under root 2 minus 1. Next is 1 by root 2 plus 1 by root 2 plus 2 by under root 2 minus 1, and this is going to be 5 under root 2 plus 2 under root 2 plus 2 under root 2 minus 1, and this is going to be 1, 1, 1. Okay, so now just simplify this. So this is going to be cancelled now, right? And this is going to be 3 by under root 2, right? 3 by under root 2 minus 1, and this is cancel out, so this will become under root 2 minus 1, and this is going to be 2 by under root 2 plus 2 by under root 2 is 4 by under root 2, right? So this is going to be 4 under root 2, and 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 under root 2. So this is going to be cancelled, and we've got it 2 under root 2 minus 1, and this is 5 and 2 is 4. 5 plus 4 is 9,
9 under root 2 minus 1. Okay, so the resultant matrix is going to be this is going to be, I'm writing here just because of the shortage of space, so this be minus 1, and this is going to be minus 1. This is 3 under root 2 minus 1 under root 2 minus 1, and this is 2 under root 2 minus 1, and this is 9 under root 2 minus 1, and this is going to be 1 1 1. Okay, so a dash value is minus 1. This is going to be new point a dash, so the value is minus 1 and comma under root 2 minus 1. For b is minus 1 comma 2 under root 2 minus 1, and this is a c point is 3 under root 2 minus 1 and 9 under root 2 minus 1. So this is c dash. Okay, although this question is quite lengthy, but this is a very easy question. Just read the entire question one time कि इसमें हमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस वो करवाना चाह रहा है, क्योंकि अगर एक ट्रायंगल हमें दी हुई है, उसे रोटेट करना है और एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट हमें दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांसलेशन अप्लाई करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट को उस ओरिजिन के ऊपर लेके आएंगे. तो हमारी जो ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स थी वो है ये. उसमें tx एंड ty आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितना ऐड करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा ताकि वो पॉइंट ओरिजिन के ऊपर आ सके. नेक्स्ट स्टेप इज हमें रोटेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, जो भी हमें एंगल दिया हुआ है. रोटेशन मैट्रिक्स ये है, उसमें जस्ट अप्लाई द एंगल. ठीक है, दिस इज द रोटेशन मैट्रिक्स. एंड फिर से जिस पॉइंट को आप ओरिजिन के ऊपर लेके आए हो, उस पॉइंट को आपको वापस वहीं पर प्लेस करना पड़ेगा जहां से आप उसे लेके आए. तो उसमें क्या आपको ऐड करना पड़ेगा, तो वो आपको tx एंड ty दोबारा से डिसाइड करना पड़ेगा. एंड फिर आप क्या करोगे, इन सब आफ्टर गेटिंग ऑल दिस मैट्रिसेस इनको मल्टीप्लाई करोगे, एंड रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज लाइक इज दिस, राइट. एंड नाउ दिस इज द रोटेशनल triangle and this is going to be the triangle which is original. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके you got the values of a dash, b dash and c dash. Okay, it's very simple but quite lengthy. Okay, now question number 15. The process of dividing an analog signal into a string of discrete outputs, each of constant amplitude, is called strobing, amplification, conditioning or quantization.